हवाओं को पताए रखना, जहां रोशन होगा दिया जलाए रखना। की है हिफाजत लहू देकर हमने, मन में सदा उस तिरंगे को बसाए रखना। Namaskar and a very happy Independence Day to one and all present here. Today, our country is celebrating its 75th Independence Day, and I, Jeet Verma, would like to extend a warm greeting to everyone on this auspicious occasion. On 15th August 1947, India attained its independence after countless years of struggling. We have paid a heavy price to gain our independence. Our freedom fighters strived for freedom. They were imprisoned, tortured, and subjected to several injustices. Yet, they did not give up. Great freedom fighters like Netaji Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Mangal Pandey, Chandrasekhar Azad, Sukhdev, and several others struggled for decades. It was their persistent zeal and dedication that this passion for nationalism did not subside. They protected our Sone ki Chidiya, which India was referred to because of its enchanting treasures and heritage. They are the reason we are breathing in an independent nation today. We must carry forward the spirit and celebrate our independence and our patriotism towards our country, not just today, but every single day of our lives. Hence, to honor our motherland and all the martyrs who laid down their lives to protect our country, we present to you a cultural program to celebrate their courage and valor. So, let's all stand proud and be ready to experience a plethora of vibrant and energetic performances by the young and vigilant students of our school in the honor of our motherland and to celebrate this glorious day. Patriotism is the cultural attachment to one's homeland and the devotion to one's own country. As Indians, we stand inspired to serve our homeland today and always. Let us all cheer for our friends, Soumya from class 7th B, Damita and Arav from class 8th D, Aditya, Manav and Yashi from class 9th B, who are here to present the extremely melodic and soul-stirring song Teri Mitti to express their devotion and fondness towards our motherland. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका।
ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ Thank you, friends, for such a soulful and patriotic presentation. Bhavya of Class 10A will now share a heartwarming story about the life and journey of Shaheed Udham Singh, in whose memory the states of Punjab and Haryana observe a public holiday on the 31st of July to commemorate his execution on the same day in 1940. India, the land of gods, diversity, and festivals, whereby every man and woman from different communities, religions, and cultures celebrate and live together as one, as Indians. Undoubtedly, India is incredible. आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें। एक बार फिर से राष्ट्र की कमान हम हिंदुस्तानी अपने हाथ धरे। आओ स्वतंत्रता दिवस का मान करें। India's independence has seen the blood of millions of natives who came out to fight the British rule and gave their lives to break the shackles of oppression. It is only due to the innumerable sacrifices and hard struggles of our forefathers that we are able to relish the fruits of freedom. On this Independence Day, it's a great privilege to narrate the untold story of the freedom fighter who avenged the Jallianwala Bagh massacre, Shaheed Udham Singh. Udham Singh was born as Sher Singh on 26th December 1899 in Sunam of Punjab, India. His father, Sardar Tehil Singh, was a railway watchman in Upali. Singh became an orphan at a very early age and was taken away by Central Khalsa Orphanage, Putlighar. There he was named as Udham Singh. He was deeply influenced by Bhagat Singh and his revolutionary group. On 13th April 1919, over 20,000 people had gathered in Jallianwala Bagh in Amritsar for a meeting.
Singh and his friends were serving water to the crowd when General Dyer, the former Lieutenant Governor of the Punjab, ordered the army to shoot at the crowd that killed more than 1,000 people in the massacre. Udham Singh escaped and was able to save himself from this massacre, but he got deeply affected by this. The carnage left him deeply shocked and resentful. It was only 2 decades later that he was able to avenge the death of hundreds of his innocent countrymen as he assassinated General Dyer on 13th March 1940. For this act of bravery, Shaheed-e-Azam Sardar Udham Singh, as he is also popularly referred to, became famous in India and abroad. Arrested immediately after the incident, he was tried in Britain and hanged subsequently at London's Pentonville prison on 31st July 1940. While in custody, he used the name Ram Muhammad Singh Azad, which represents the three major religions of Punjab and his anti-colonial sentiment. Ram, Muhammad, Singh and Azad. All in one name. No one could guess from his appearance or name whether he was a Hindu, Muslim or a Sikh. But one could certainly tell that he was an Indian, a Hindustani. The child Sher Singh, who went on to become Udham Singh and later immortalized as Ram Muhammad Singh Azad. He changed his name, symbolizing the equality of all faith and religions of India. This great Indian revolutionary and freedom fighter from Punjab ignited the spark of patriotism among millions of Indians with his devotion to the motherland. The strength and valor of Udham Singh will forever continue to inspire the future generations to stand against injustice. He will always live in our hearts. Thank you, Bhavya, for sharing that extremely inspiring story. Mokshi from class 6D will present before us the delightful poem Where the Mind Is Without Fear, written by the Nobel laureate Rabindranath Tagore. This poem was written by him before India achieved its independence, and it is filled with hope and optimism. It represents Tagore's vision of the new and awakened India. Greetings to one and all. On the occasion of Independence Day, I am Mokshi going to recite a very inspirational poem from Rabindranath Tagore's Gitanjali. Chito Jeta Bhaya Shunya, where the mind is without fear. This poem expresses the author's longing for a heaven of freedom, where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arm towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of that habit. Where the mind is led forward by thee. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Let us all do what we possibly can to create that heaven of freedom that Rabindranath Tagore visualized almost half a century before India's independence. Jai Hind. Thank you, Mokshi, for that inspirational recitation. Next, we have an enthusiastic group comprising of promising singers like Sarthak, Harshit and Arman from 3rd A, Sahajpreet from 3rd B, Avyan from 3rd C, Geet and Gurbani from 5th B, Tanishka from 5th C, and Anvi from 5th D. They are going to present another melodic and inspirational song, Hum Honge Kamyab. This song was written by the prominent Hindi writer
Shri Girija Kumar Mathur in the honor of our motherland, and it will surely leave us all truly mesmerized. होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास होगी शांति चारों ओर एक दिन हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम चलेंगे साथ साथ एक दिन नहीं डर किसी का आज नहीं डर किसी का आज नहीं डर किसी का आज के दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास नहीं डर किसी का आज के दिन We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. होंगे कामयाब एक दिन, we shall overcome someday. होंगे कामयाब एक दिन Thank you for that enchanting performance. Now, Pallavi of class 10C will share a captivating act about the life of the courageous and spirited Rani Lakshmi Bai of Jhansi. आज़ादी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखवाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अदम्य शौर्य और साहस के लिए जानी जाती हैं। बचपन में हम सभी ने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता ज़रूर सुनी होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम और उनकी वीरता पर लिखी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1835 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका जीवन प्रेरणा से भरा था। लक्ष्मीबाई ने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। झांसी की रानी सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा है। आज़ादी की अलख जगाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भारत को स्वतंत्र कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी उनके कहे शब्द हमें देश प्रेम से भर देते हैं। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपनी झांसी की रक्षा करूँगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी आज़ादी का उत्सव मनाएं। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के दिल में आज़ादी की भूख बनकर दहकेगी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी आज़ादी बड़ी होती है। झांसी की रानी हम सभी के लिए साहस और हिम्मत का जीवंत उदाहरण है। यह कहा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम रहेगा। वह एक चमकता सितारा थी जिसका प्रकाश ना जाने कितनी ही महिलाओं के लिए पथ प्रदर्शक बना। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं उन्हें नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Pallavi,
for sharing such an amazing act. The national flag of a country not only represents the values, virtues, and ideas of the citizens and the nation, but also embodies the culture, heritage, and history. The Indian national flag, also called the Tiranga, represents 3 bands of color along with the 24-spike Ashoka Chakra. To honor our Tiranga, Avni Athri of class 7D will present a Hindi poem titled Tiranga. सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवनी अत्री कक्षा 7वीं की छात्रा आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दशों दिशाओं वीरों के यशगात से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुल्हार है, इसके आंचल की छैया से छोटा यह संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। जय हिंद। That was such an inspirational poem. Thank you, Avni. This brings us to the end of our cultural presentation. And I, Jeet Verma, on behalf of the students, staff and management of the Saint Soldiers School Panchkula, once again wish everyone a very happy Independence Day. May the glory of Independence Day stay with us forever and ever. May our martyrs' dream of a progressive nation come true. And may our national flag fly higher and higher each year. Jai Hind, Vande Matram. Thank you and have a great day ahead.